Hello students, how are you all? I hope you all are doing great and welcome to my channel A to Z English Language Institute. This lecture is really requested by most of my students in order to enhance their speaking skills. So this lecture is an overview of the top 30 questions to enhance speaking skills because most of the students are unable to speak fluently, specifically within a short period because some don't have time, some are professionals and quite busy due to working schedules. And if it's not the case, we have problems while arranging the sentences and your brain stuck due to lack of vocabulary and don't know the exact grammar structure, and sometimes we don't have an idea about the topic while communicating. So I've arranged a crack series for you only with 30 questions. If you want to improve your speaking proficiency, you just need to follow the structure because this series is based on how to construct your answer perfectly like a native speaker. And I will elaborate on each question with practical strategies, authentic formulas, and you will also learn vocabulary words that are significantly important and helpful in your IELTS exam and as well as in your day-to-day communication while talking with your friends, family members, and maybe with your colleagues. So as I've already mentioned that this lecture is an overview, so I'm going to discuss the questions briefly. After that, I will share detailed videos on each question and elaborate on each question with the structure and formula that how to construct an answer. Okay, students, I divided 30 questions into three parts. And for IELTS students, for IELTS speaking exam, they have three parts for speaking test. In part one, you have to introduce yourself and there would be an interview regarding your working experiences, your education. And after that, there is a long speech for at least 2 to 3 minutes. You need to speak on a specific topic. After that, there would be a discussion on different topics. So let's have a look at our first part. So the question number one is, do you prefer X to Y? It means you need to talk about the two things. Which one you prefer, writing letters or sending emails, talking on phone or chatting, or if maybe you eating or cooking, something like that, you need to talk about your preferences as in question number one. So second is, what do you usually normally do? You need to talk about your average day, your normal daily routine. You need to describe your typical day. Question number three is, what do you like to do in your spare time? Like your free time and you're on holiday when you are not working. So what do you like to do? You need to describe your free time. And the question number four is, what do you dislike about? Dislike about read book, visitors come to your home, or something like that, which you don't like. Here you need to talk about question number three, you need to talk about your liking. And in four, you need to talk about your disliking. So question number five is, how often do you do dash? Read books or go out to dinner with friends? Yeah, it can be anything. And question number six is, what do you like most about your student life, maybe, or your job, maybe, or your city, or anything? So here we have question number three and four, liking, disliking, and then how often do you do anything you can talk about. What do you like most about your country, your weather, or anything you can talk about? Is dash popular in your country? Like, is watching sports popular in your country? Or it might be the music popular in your country. What is the best time of year to do what? Studying, traveling, outdoor activities, anything else. Why do some people like watching TV, enjoy reading, gardening, anything? Question number 10. When was the first or last time you used a computer, went on holiday, or anything? Question number 11 is, did you ever learn to do dash? Like, did you ever learn how to swim when you were young? Such type of question they can ask you. And maybe your friend can ask you, did you ever try to learn
music or piano or anything. How has dash changed? Like, how has your hometown is changed in recent years? Such type of questions. How would you improve your apartment, your place, anything? Question number 14 is how important is art in your life? How important physical exercise for you? Question number 15 is what do you want or hope to do in future? Like finishing studies or anything. Question number 16 is do people do get enough? It can be do people today do enough physical exercise or do children do enough sports in school? Do people in your country do enough creative activities in school? Such type of a questions. And how can people find out about news or find out about art, music, and something like that? Should people be given more holidays or should people be given more benefits or anything like that? Is it difficult to do dash? Is it difficult to learn another language? The question number 20 is dash suitable for types of people? Like, is riding a bike suitable for elderly people or something like that? So such type of a questions you might be asked by your examiner or somebody from your family members while talking, communicating. So with the help of these questions हमें ये आइडिया मिल गया कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 में जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हैं। हम लोग नॉर्मली घर में भी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ या बाहर कलीग्स के साथ। तो यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि अगर प्रेफरेंस की बात करनी है तो कैसे उस आपने उसको डिस्क्राइब करना है अपनी प्रेफरेंस को। देन अपनी डेली रूटीन को कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करना है हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जब व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम, अपने स्पेयर टाइम के बारे में भी यहाँ पे हम हॉबीज के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में, आपकी कंट्री के बारे में, बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, सीजन्स के बारे में बात कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पीपल के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस 20 में ऑलमोस्ट सब चीजें ही कवर हो रही हैं। कि डिड यू एवर लर्न टू डू, कोई भी चीज आपने कभी सीखने की कोशिश की? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए अगर स्पीकिंग का टेस्ट आप दे रहे हैं तो एग्जामिनर क्या चीज क्या स्ट्रक्चर को सुनना चाह रहा होता है तो उसको हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, ये आपके सभी क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करना है वो विल डिस्कस। सो लेट्स मूव ऑन पार्ट 2। Here we have 4 questions in part 2. Part 2 आपका 2 to 3 मिनट का एक स्पीच रहता है। एग्जामिनर आपको एक टॉपिक असाइन कर देगा जिसमें आपको बात करना होगा एक ही टॉपिक, कोई पर्सन के बारे में। मोनोलॉग का मतलब होता है लॉन्ग स्पीच। मोनोलॉग मीन इज अ लॉन्ग स्पीच। 2-3 मिनट्स की आपको एक स्पीच देनी होगी। कोई भी आपका फेवरेट पर्सन पूछ लेगा या आपसे टीचर का पूछ लेगा कि आप टीचर को डिस्क्राइब करें। उसके बाद कोई आपका फेमस पर्सन, सेलिब्रिटी, किसी भी के बारे में भी पूछा जा सकता है। कोई प्लेस हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, पास्ट इवेंट हो सकता है। तो ये 2-3 मिनट्स को कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको, क्या स्ट्रक्चर है जिसमें पहले ये सेंटेंसेस बोलेंगे फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ये, इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि पार्ट 2 को कैसे 2-3 मिनट इतनी लॉन्ग स्पीच को कैसे हमने डील करना है। क्योंकि कहने में 2 मिनट्स ही हैं बात करने में, लेकिन 2 मिनट्स बात करते वक्त पता चलता है कि भाई 2 मिनट्स जा रहे हैं, बहुत उसमें टाइट हो जाती है हालत। पार्ट 3, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। इसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कशन आ जाती है। अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा एग्जामिनर आपसे, वाई वाले क्वेश्चंस बहुत पूछेगा आपको। यू नीड टू ओपिनियंस देनी होंगी आपको, गिविंग एंड सपोर्टिंग ओपिनियंस देने। कोई भी टॉपिक रहेगा उस पर आपको ओपिनियंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करना है, लॉजिकल एग्जाम्पल्स देनी है। उसके बाद 2 डिफरेंट ओपिनियंस पूछेगा कि आप किसको प्रेफर करते हो, फिर उसके बाद अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
और कुछ भी इस तरीके के आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग रहेगी, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके सही कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होने हैं, तो कैसे उसका फॉर्मूला है वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये 30 क्वेश्चंस थे, टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो पता चल गए, लेकिन इम्पोर्टेंस ये है, इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से हम देखते हैं कि इनको यूज कैसे करना है, इसको अपनी डे टू डे हमने कम्युनिकेशन में कैसे लेके आना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर फर्दर कोई क्वेश्चन रहे सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।